मेमोरी है। सो ये आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी के लिए अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। पहले आपको बेसिक ये कंप्लीट करना है कि व्हाट इज़ मीन बाय कंप्यूटर और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जो 3 कंसेप्ट आप क्लियर करेंगे, बाद में आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी और टाइप्स ऑफ मेमोरी, दैट मीन्स द प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इसके बारे में और बहुत सारे जो हिस्ट्री है कंप्यूटर की उसके बारे में देखेंगे। सो लेट मी कंटिन्यू। सो अनदर डेफिनेशन इज द कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस automatically using the set of the instructions provided by users. So arithmetic operation means what, and logical operation means what? Arithmetic means the plus, minus, multiplication and division. These are the operator which can use in that you can कैलकुलेट और सम कैलकुलेशन जो भी होता है, और इसी ऑपरेटर के माध्यम से आपका कैलकुलेशन कंप्लीट होता है। एंड डिसीजन मेकर सिस्टम, दैट मीन द यू कैन यूज द लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट। दीज आर द ऑपरेटर विच कैन यूज टू, क्या कर सकते हैं उसको, कंप्यूटर में लॉजिकल डिसीजन लेना है या लॉजिकल प्रोसेस होता है, वो डिपेंड रहता है 3 ऑपरेटर पे, जिसका नाम है एंड और नॉट। दिज आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। चलिए देखते हैं, एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि और भी क्लासिफिकेशन के कंप्यूटर के कैसे हो सकते हैं, और क्लासिफिकेशंस डिपेंड्स अपॉन द कंप्यूटर मेमोरी एंड स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी दैट what are the types of computers, and the first one is the analog computer, second one is a digital computer, and third one is a hybrid computer। आप देख रहे हो एनालॉग कंप्यूटर में दो, एक पहला जो है स्पीडोमीटर है, सेकंड जो वाला है थर्मोमीटर है, और डिजिटल कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर बोला गया है, एंड लास्ट वन इज़ अ लैपटॉप। सो दोनों में क्या फ़र्क है वो, and this desktop and laptop computer depends upon their the speed and the size of the memory। so okay, ये क्लासिफिकेशन उसके ऊपर से बनाया गया है। पहला जो देखते हैं एनालॉग मीन्स व्हाट। एनालॉग को आप किस तरह का सोचते हैं, एनालॉग कंप्यूटर और एनालॉग के कंप्यूटर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो एनालॉग का मतलब, एनालॉग मीन्स व्हाट। So analog computer, spelled analogy in the British English, is the form of the computer that use the continuous physically phenomena such as the electrical, mechanical, hydraulic quantities to model and the problem being the solved. So second point, which is very important, operate and input continuously varying the electrical voltage. So analog computer operate on input only, so continuously varying electric voltage, it means it measures the input rather than the counting. Simple thing, analog computer measures input rather than the counting, मतलब ये काउंटिंग नहीं कर सकता है, ये मेजर्स कर सकता है। सो जैसा कि वोल्टेज एग्जांपल दिए ऊपर। सो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कितना पास हो सकता है, अभी फ़िलहाल कितना करंट वोल्टेज कितना है, वो जानने के लिए ये एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। सो दैट मीन्स द इनपुट रेदर देन द काउंटिंग। एंड अगेन वी से दैट द नेम that is the derived, that means the analog is a name that is derived from the Greek word analog, A-N-A-L-O-G, analog, and denote that the computer functions by the establishing the similarities between two quantities that are the usually expressed as voltage or current. Simple thing. So you can measure only the voltage and current. Okay, so
and another. So analog computer again the powerful tools to solve the differential equations, and they are mainly used in scientific design and productions environment. So okay, now we see that. सो डिजिटल कंप्यूटर, अगर डिजिटल कंप्यूटर के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी है तो आपके घर में कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर घर में लैपटॉप है, उसको अच्छी तरह से अगर देखा जाए तो आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि ये डिजिटल कंप्यूटर किस टाइप का, और भी इसमें डिजिटल कंप्यूटर किस टाइप का डिजिटल कंप्यूटर है वो जानने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी और आपके बहुत सारे फ्यूचर में आप ये स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए भी ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, और अगर बिजनेसमैन है या कोई भी पर्सन है उसको कंप्यूटर के बारे में जानकारी ज़रूरी है। इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको कंप्लीट वीडियो सेशन देखना है और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इसके बारे में कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत ही ज़रूरी है इसके बारे में। सो चलिए देखते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर मतलब क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर्स ऑपरेट इसेंशियली बाय काउंटिंग, ऑपरेट इसेंशियल बाय डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट इसेंशियली बाय काउंटिंग and all quantities are expressed as a discrete digit or numbers. Is it clear? So all quantities are expressed as a discrete digit or numbers. Computations are done with a numerical digit. मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू काउंटिंग कर सकता है, टोटल कर सकता है, सम कर सकता है, डिवीजन कर सकता है, मल्टीप्लिकेशंस, ऑल ऑपरेशंस डन हियर. So again, mathematical expressions are represented as a binary digit 0 and 1. Okay, 0 and 1. So computer will understand only their language 0 and 1, and all operations are done using this binary digit at a very high rate. And one more thing is that the digital computer basically know like addition, subtraction, multiplication and divisions also. सो एंड घर पे जो कंप्यूटर है वो आपका किस टाइप का कंप्यूटर है, मतलब डिजिटल कंप्यूटर है। चलिए देखते हैं। सो हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वन, हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर किसको कहा जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे लिए बिजनेस में या इन्वायरमेंट में हमारे देश में किस पर्पस से बनाया गया है या किस पर्पस से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो देखते हैं। सो हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइन फीचर्स, दैट मीन कंबाइन बोथ फीचर्स, सो डिजिटल एंड एनालॉग्स, डिजिटल एंड एनालॉग्स कंप्यूटर. In this computer, some calculations are done in the analog portions of the computer and some are done in the digital portions of it. You can use, if you give any example. So I like so one more important example is in hospital. So they can use doctors and doctors in the hospital, they can use as a devices may measures patients' heart functions, temperatures and other vital sign. So which is very important. So patients heart function के लिए, temperature and other vital signs, and this measurement may then be converted into the numbers and supplied to digital component into the systems. So these measures may be then converted into the numbers. जो भी analog device may be measures patients heart functions, temperatures and the other vitals, and these measures may then be converted into the numbers and supplied to the digital component in the system. And this component is used to monitor the patients
monitor patient sign, patient's vital signs, and to send immediate signal to the nurse stations if any abnormal readings are detected, which is very important, लास्ट की लाइन जो है बहुत ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम देखा जाए तो ये जो लास्ट की लाइन है, सो सप्लाई द मॉनिटर पेशेंट्स, दिस इज़ वेरी important, and convert into the numbers and supply to the digital component in the systems. So this component is used to monitor the patient's vital sign and to send immediate signal to the nurse stations if any abnormal reading are detected. So again, see that we have some classifications of the computer and only on the basis of the computer size and speed of the computer. So चलिए देखते हैं कि क्लासिफिकेशन किस टाइप के क्लासिफिकेशंस है। सो पहला जो क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है, पहला क्लासिफिकेशन जिसको बनाया गया है पहला है माइक्रो कंप्यूटर्स, और माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। सो माइक्रो कंप्यूटर, आप किस टाइप का माइक्रो कंप्यूटर घर पे कंप्यूटर होता है, किस टाइप का कंप्यूटर होता है, देखते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर है या डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर अगेन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। सो अमंग दिस let us see first microcomputer. So microcomputer, desktop computer, is it clear? Microcomputer means the desktop computer, a personal or micro mini computer sufficient to fit on the desk. So and a laptop computer, a portable computer complete with an integrated screen and keyboard. It is generally smaller in the size that and desktop computer and larger than the notebook computers. So notebook computer also there in that microcomputer class. So again one more thing is that, so let us see palm top computer and digital diary and notebook PDS, a hand size computer. Palm top have no keyboard, but the screen serve both as the input and output device. And another device is also there in microcomputer, which is known as a palm top computer, digital diary, notebook and PDS. So these are the microcomputer which we have discussed about that. So now let us see the one example old computer, like in the last generations, like this ये कंप्यूटर आपने देखा है, सो नीचे दिया है देखा है। सो देखते हैं अभी सेकंड मिनी कंप्यूटर किसको बोलते हैं, मिनी कंप्यूटर हमारे घर में है या नहीं, मिनी कंप्यूटर कौन यूज़ कर सकता है और मिनी कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या है। सो देखते हैं कि मिनी कंप्यूटर मीन्स द मिड साइज कंप्यूटर इन द साइज एंड पावर। मिनी कंप्यूटर लाई बिटवीन द वर्क स्टेशंस एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। कहाँ पे यूज़ होता है, वर्क स्टेशन में यूज़ होता है, ओके, एंड मेन फ्रेम लाइक so okay, and this is also known as a mid-sized computer. Mid-sized, why we call mid-sized computer? Because so depends upon the size and the power, depend upon the computer size and the power. Mini computers lie between the workstations and mainframe computer. So in the past decade, the distinctions between the large mini computers and a small mainframe computer has a blurred. However, as has distinction between small mini computer and workstations. So
But in the general, in mini computer is a multi-processing system capable of the supporting from 4 to about 200 users simultaneously. So mini computer is a multi-processing systems. Why we call multi-processing systems? A mini computer is a multi-processing system capable of the supporting from 4 to about 200 users simultaneously. So like this. अभी यहाँ पे देखते हैं मिनी कंप्यूटर स्मॉल मिनी लैपटॉप. Okay, like this is the best example of the mini computer. Now the last two more. So mainframe computer and last one is a supercomputer. We will see the first one before third one. Mainframe computer capable a very large and expensive computer capable of the supporting 100 or even the thousands of users simultaneously. In the mainframe computer, for example, handle 90% of all credit cards transactions and 68% of the all productions IT workloads, and 80% of all computer processing done by the world's and largest airlines, bank, insurance companies and retailers. Typically, the mainframe computer uses are highly transactions workloads such as the payroll computed, so this is the best पिक्चर्स. यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं आप कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का इमेज. सो एक्चुअली इन द हायरार्की दैट स्टार्ट विथ अ सिंपल माइक्रो प्रोसेसर at the bottom and move to supercomputer at the top, and mainframes are just below the supercomputer. So this is the best example of the mainframe computer which is used in the scientific and in engineering applications. Clearly mainframes are still quite useful to today's largest company. So last one is a supercomputer. Supercomputer, fastest and most powerful type of computer. Fastest and most powerful types of computer. Supercomputer are very expensive and are employed for the specialized applications that require immense amount of the mathematical calculations. For example, so weather forecasting required a supercomputer. Weather forecasting required a supercomputer. Now, other uses of a supercomputer include animated graphics, fluid dynamic calculations, nuclear energy research, and petroleum explorations. So, okay, and the chief difference between the supercomputers and mainframe is that the supercomputer channel all its power into the execute a few program as fast as possible, whereas the mainframe uses its power to execute many program concurrently. Unlike traditional computers, supercomputers use more than one central processing unit, and this CPU, that means central processing unit, microprocessors are grouped into the computer nodes, comprise is processor or group of processor, systematic multiprocessing, that means SMP, and memory block. At the scale, supercomputer can contain tens of the thousands node. So now this is the best image of the supercomputer. So person who observe how supercomputer is working, what the speed
what size of the and what is the लास्ट वन देखते हैं यहाँ पे लास्ट में कि ये दो जो इमेज है द पर्सन जो खड़ा है वो सुपर कंप्यूटर में ऑब्जर्व कर रहा है, सुपर कंप्यूटर में अभी स्पीड क्या चल रहा है, वहाँ पे वर्किंग कर रहा है या नहीं, वो जस्ट ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व अंडर द ऑब्जर्वेशंस. नाउ एंड सेकंड इमेज इज अ complete setup or complete setup of hardware. Number of processors are there, motherboards, and many huge amount of data can stored in the memory. So यहाँ पे टेराबाइट गीगाबाइट इसके ऊपर से ज़्यादा इसमें मेमोरी साइज है. सो थैंक यू वेरी मच. सो ओके, थैंक यू महाराज.